Okay. Good evening, everyone. Welcome to RAYACADEMY IAS. Please make sure if I'm audible. Good evening, Gupti. Okay, so how was the prelims question? We'll start from here. Prelims question केमिति थिला जो मैंने भी नेक्स्ट ईयर दब मैंने पूरा कुर्सी की पेटी बांध लो से टाइप रो थिला राइट. गुड इवनिंग देवकी सत्य. ओके एंड सीरियसली बहुत टफ थिला. मु तो कहबी टफेस्ट प्रिलिम्स एवर इन आवर ओपीएससी हिस्ट्री. माने यूपीएससी को भी काटिदेला टू बी ऑनेस्ट. माने यूपीएससी रे तो फिर भी केतरा जिंस करी होथला. आ एटा एमिति क्वेश्चन नथला कि किछि माने आमे जाननु आमे जानि छ सब आमे जानि कि भी आमे जानिनु सेही टाइप रो थिला. माने तमे क्वेश्चन पढिबो हाँ ठीक अच्छे आम यहाँ पढ़ीचु फाइनेंस कमिशन पढ़ीचु आउ कौन से एआई समिट पढ़ीचु नसम एसआर मिसाइल मु निजे पढ़ीचु स्टिल ता भितर जो डिटेल माने एते डिटेल एते एक्सपेक्टेड नथिला राइट. कौन नसम एसआर मिसाइल पढ़नथला हमें नसम एसआर मिसाइल जे पीडीएफ टाकू अगेन ध्यान से देखिथिबो सब पॉइंट्स अछि है बट ऑब्वियसली एते डिटेल रे केही भी देखंतिनी माने हमर पढ़िबा पे बहुत जिंस थाए. आमे कोन खाली से पर्टिकुलर गोटे जिंस को एते डीपली पढ़िबा की हिस्ट्री अछि ज्योग्राफी अछि से भी हिस्ट्री पचारछि कोन मोहम्मद बिन तुगलक ठीक अछि से एटा करले बट क्रोनोलॉजी अरेंज करके कह माने कोन से केबे एटा करथले केबे सेटा करथले तापर एटा करथले कटक रो फर्स्ट कॉलेज माने फर्स्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज केबे को मसिया रही थिला. हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आम से सब एत जिनस जानी थी. सो माने बहुत ही खतरा क्वेश्चन थिला. ओडिशा स्पेसिफिक कंटेंट ठीक अच्छी बढ़ी लास्ट ईयर भी आम तार हिंट पाई ओडिशा हिस्ट्री रो क्वेश्चन थिला. ओडिशा ज्योग्राफी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बट करंट अफेयर्स भी पढ़ी एत डिटेल रे पढ़ी सेटा हला कथा. तो आमको से कौन कहली आमको टिके बे स्ट्रेटेजी से हिसाब से आमको मॉडिफाई करिया को पड़िबो खास करके करंट अफेयर्स रो हला. मत बहुत जन कहते करंट अफेयर एत डिटेल रे किए पढ़ाए. मु जते भी मोर क्लासेस तमे एबे तो मु कमै देछि नले मोर स्लाइड्स गुडा थिला माने 80 90 100 एमसी स्लाइड्स थिला एंड मोर गोटे गोटे क्लास पाखा पाखी 3 घंटा जाऊला करंट अफेयर्स रो. मु धीरे धीरे ताको कमै देली बिकॉज़ हमको थिला कि नै बहुत सारी जिंस कवर अप करियार अछि. बट एबे जदि हम देखिबा गोटे टॉपिक को इन डेप्थ न जाय कि हम आउटे को जंप करबाटा भी ठीक होबा नाही. ओके तो दैट शुड बी आवर स्ट्रेटजी एंड पीडीएफ ऊपर प्लीज रिलाई करो नाही. व्हाटएवर पीडीएफ यू आर गेटिंग प्लीज मेक नोट्स ऑफ इट सो दैट जेबे भी प्रीलिम्स थबो एबे तो हम नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स पे हम एबे तो पढिबानी हमर एबे टाइम ता होची मेंस पे प्रिपेयर हबार फ्रॉम जून टू नहीं डिसेंबर पर्यंत वी हैव टू बी मेंस रेडी फर्स्ट तापरे जनवरी रो हमर फोकस शिफ्ट हबो प्रीलिम्स को. तो जेते फोकस शिफ्ट हबो प्रीलिम्स को इट विल नॉट बी पॉसिबल कि तमे जाई कि पुराना पीडीएफ्स को देखुथबो एंड सेतरे रिवीजन भी हबो नाही पीडीएफ्स रे. सो पीडीएफ रो नोट्स बनाओ जहाँ भी क्लास रो तमे देखुछ जो भी टॉपिक आमे डिस्कस करछु नीचे नोट्स बनाओ ता विषय रे तमे भी टिके रिसर्च करो बिकॉज एवरीथिंग विल नॉट बी कवर्ड इन 2 hours और 3 hours. वी ऑल नो इट एंड बहुत सारे दिन को 100टा न्यूज आमे सेथरे करछु वीकली करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी फिल्टर हो जाउची एंड से भितर भी फिर तमे किछरे जिंस स्किप निहाते करिवो. ओके तो प्लीज मेक योर ओन नोट्स जोटा कि तमे प्रीलिम्स आगरो रिवाइज करि परिबो लास्ट ईयर रो करंट अफेयर्स दैट टू इन डिटेल. फॉर एग्जांपल हाँ यूपीएससी एग्जाम रे रिटन एंड इंटरव्यू रो ओडिया लैंग्वेज रे दे परिबि नै. गोटे एग्जांपल मु दोची एटा में पढ़थिलु 1 जून रे जून 1 रे फाइनेंस कमिशन विषय रे मु पढ़िथिलु आर्टिकल आस्थिला. ओके अगेन से लास्ट वीक माने लास्ट वीक ऑफ मे रे आर्टिकल आस्थिला
एंड एमती नुह कि आर्टिकल आसला बेली आम पढ़िलु फाइनेंस कमिशन सेटअप जेहेतु होता पढ़ा पढ़ी जावा निहाती दरकार बिकज इट इज ए माने कौन इम्पोर्टेंट बॉडी तो ये सब जिन आम बेसिक देखी कौ आर्टिकल रे आसछि मु तुमको कही हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कौन वर्टिकल डिवोल्यूशन कौन राइट केते जण मेंबर थांती किए तांकर चेयरमैन बिकॉज ए टाइप रे क्वेश्चन हमरो प्रीवियस ईयर पचार थिला हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी और दिस कमिशन एक्सेट्रा और को फंड रु तांको ग्रांट आसे सेटा को आर्टिकल रे अछि ए छोटो मोटो जिंस गुडा का हमें देखिथिलु ता बाद भी आमे मु तुमको कहिथिली को जिंस गुडा को इंक्लूड करा हेची माने फाइनेंस कमिटी रो जो रिकमेंडेशंस हला कि हां ए सब जिंस गुडा को इंक्लूड करा हेची वर्तमान these are the parameters plus तमरो जीएसडीपी ऊपर भी फोकस करा हेची जीडीपी जीएसडीपी ऊपर एथरो फोकस करा हेची जोडा कि वन ऑफ द स्टेटमेंट थिला एटा भी तमरो से एटा थिला ए एग्जैक्टली ए स्टेटमेंट थिला 3% को से बुलेगी केते गुटा अलगा परसेंटेज पछर थिला हैला कि जीएसडीपी एति की रहिबा दरकार कि कोन द कमिशन आल्सो एबोलिश्ड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स this was also one of the statements okay and yes vertical devolution 41% मैं तुमको कही थी 100 टंका अच्छी 100 टंका से 41 रुपीस दबो 41 रुपीस स्टेट्स को देला से स्टेट्स माने से 41 रुपीस को डिवाइड करिवे among each other तो yes एटा पचार थिला एटा ई जिंसरा कहितला ई जिंसरा रखला आउट स्टेटमेंट कोन थिला मतलब मन पडुनी एग्जैक्टली बट yes एरा सब को बाहर आसले कि किछ बाहर आसनी किछि बाहर आसनी जेहेतु फाइनेंस कमिशन न्यूज रे थिला आर्टिकल आसी फाइनेंस कमिशन विषय में पढ़ीचु बट ए सब जिंस गुडा को ना बेले बेले एग्जाम हॉल रे हमको मन पड़िबो नाही कि एते डिटेल किए मन रखिबो सेथि पे हम कहूची नोट्स बनाओ ए पीडीएफ टा एंते ही रहि जिवो पीडीएफ हे कि ही रहि जिवो तमरा एग्जाम सरी जिवो पीडीएफ रहि जो तो मते पीडीएफ प्लीज मागिबो नाही नो डाउट यू आर गेटिंग इट ओके क्लास रे भी तमे तो देखुचो लाइवली रिकॉर्डिंग्स भी तुम पर देखि परिबो प्लस तमर पीडीएफ भी अछि सेठु तुम निजे नोट्स बनेबो एंड ए नोट्स गुडा को तुम रिवाइज करिबो केबे जनवरी 2 यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग दिस नोट्स ओके दैट शुड बी द स्ट्रेटजी व्हाट आई फील yes you have to voice asune yes you have to ashita एटा गोटे एग्जांपल मु सेति पे तुमको देली कि कोन पे हमको डिटेल आमे तो बेसिक जिंस पढिलु माने आमे एते के भी करूछु आमे करंट अफेयर्स को स्टैटिक्स से तो नै कि पढुछु एटा हला स्टैटिक्स जिंसटा रहि गला हला एटा कोन पे से न्यूज रे थिला बिकॉज़ ऑफ द डिवोल्यूशन वर्टिकल डिवोल्यूशन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन तो तार रिकमेंडेशंस कोन दैट इज करंट अफेयर्स ओके बट ए जिंस गुडा को भी आमे पढिछु ना एटा हला स्टैटिक हला से एठु न पचारि कि से हमको करंट अफेयर ही पचारिला बट इन डिटेल पचारला डेप्थ रे पचारला तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑब्वियसली से माने एक्सपेक्ट करूछन कि हमें डिटेल रो सब जिंस गुडा को देखिबा जो ओवरलुक करके गले हबो नहीं कि वन लाइनर हिसाब रे पढ़ी के गले हबो नहीं राइट गुड इवनिंग पंकज गुड इवनिंग दीपांजलि ओके सो आज दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी कि जहाँ भी आम करंट अफेयर पढ़ीचु तुमर काम है तुम प्रति जिनसर नोट्स बनइब प्रति टॉपिक रो फॉर एग्जांपल एटा आम पढ़िबा आबे सिप्री रिपोर्ट सिप्री रो स्टैटिक सिप्री रो ए रिपोर्ट रे डिटेल रे कोन अछि एग्जैक्ट नंबर्स भी मन रखियार अछि बिकॉज़ सेथिरे ही स्टेटमेंट गुडा को भूल जेबो से पजाटला ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4 आई मीन पाखा पाखी 20 ना 30 टा खंडे तो क्वेश्चन निहाते थिबो सेमते पचार थिला सो चारिटा स्टेटमेंट तमे जदी 100% श्योर नाही तमर पक्का सरा भूल हबो हां केते जन को तुक्का काम रे आसी जीवो ओनली 2 मार देबा एटा ओनली 3 मार देबा बट देन अगेन भूल तो हबार चांसेस बढ़ुची ना एंड दैट मींस तमर नेगेटिव मार्किंग बढ़ुची
एंड एमिति जदि कहबो आ कोन कहबो ता पूर्व क्वेश्चन माने ता पूर्व ईयर रे देखिबो जदि कोन होची तमरो एसएससी टाइप रे क्वेश्चंस गुडा पचार देथिला फैक्चुअल क्वेश्चंस पचार देथिला आ पूर्व थरक ए थर एते डिटेल रे पचारला नेक्स्ट थर कोन करबो कोन जाना तो हमको एसएससी टाइप रो भी माने वन लाइनर भी पढथबार अछि प्लस डिटेल रे भी पढथबार अछि एंड ऑब्वियसली जदि तमे डिटेल रे पढुछो किछि वेस्ट हबो नाही दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर मेंस तमे जदि मेंस को भी टारगेट करूछो हमर सब बेले टारगेट रहबा कथा means not prelims prelims तमे जदि एथर कट ऑफ मन कर गला 50 फॉर एग्जांपल मन कर गला 50 जने 60 रखिछि से भी से लेवल रे आसी जिवो जने 100 रखिछि से भी से लेवल रे जने 90 रखिछि से भी से सेम लेवल रे आसी जिवो एट द एंड तुमको रैंक दबो आउट माने रैंक भलो दबो प्लस तुमको क्लियर करेबो मेंस रे जिंस लेखिबा पे जिंस आनिबो कोठु तमे समस्त को कंपटीशन जेहेतु बढ़िलानी आम स्टैटिक जिनस लिखि लिखि पारिबानी हमको जदि करंट अफेयर्स आम तमे से पकेब निहाती आंसर भितर ऑब्वियसली विल गेट मार्क अंटिल अनलेस तमरो मन इच्छा मार्किंग रैंडम मार्किंग दो नाहंते जेमते एथर करछन बोचन का सहित सो डिटेल पढिले किछि असुविधा भी नै तमरो मेंस पय काम हबो प्लस प्रीलिम्स पय भी तमे रेडी हेकी जेबो सेति तो हमें एश्योरिटी दे परिबा ओके सो विल स्टार्ट today's class no more pravachan let's start okay so CPRI report what is CPRI report suni chakebe any idea on CPRI report CPRI report India expanded its nuclear आर्सेनल इन 2025 माने 2025 रो डाटा ये देछि राइट इंडिया इज एस्टिमेटेड एटा देखा जाउछि कि नै म कहि परिबेनी इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव मॉडेस्टली एक्सपांडेड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल माने न्यूक्लियर आर्म्स गुडा जो हम पाखरे अछि हला तार गोटे लिस्ट रखे सब हिसाब रखे किए सिप्री नॉट इंडिया पाखरे एंटायर ग्लोबली को देश पाखरे केतेटा न्यूक्लियर आर्म्स से माने अछन रखिचंती केतरा यूज करचंती कि कोन करचंती केतरा एक्वायर करचंती केतरा इंपोर्ट करचंती केते एक्सपोर्ट करचंती सब डाटा रो जिंस तुमको माने गोटे रिपोर्ट रे मिलिबो दैट इज सिप्री रिपोर्ट हला तो इंडिया कोन करची ए आर्टिकल ता हमरो इंडिया ऊपर रहिला इंडिया एक्सपांड करिछि तार न्यूक्लियर आर्सेनल इन 2025 एंड कंटिन्यूड डेवलपिंग new nuclear delivery system according to the Stockholm International Peace Research Institute. What is this? This is SIPRI. Okay, so SIPRI जो कहूची तारो full form हैला एटा. Okay, Stockholm International Peace Research Institute रो report एटा. Okay, जोटा कि एबे ए last Monday release ହେଇची. The report estimated that India's nuclear stockpile has increased to 190 by early 2026. आम पाखरे 2000 माने 25 रे जदि आमे डाटा देखिबा आम पाखरे 180 वारहेड्स थिला न्यूक्लियर वारहेड्स आम पाखरे केते थिला 180 जोटा कि वर्तमान बढ़ी के हे जाई छी 190 ओके एंड सेथि पे आर्टिकल कि इंडिया एक्सपांडेड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल 180 थिला एंड वर्तमान हमें 190 रे हे जाय छ तो तम काम हला आमे केते नंबर रे अछु जदि तमे देखिबो चाइना पाखरे सबुठु अधिक अछि न्यूक्लियर वारहेड ता पाखरे केते अछि पाकिस्तान पाखरे केते अछि यूएसए पाखरे केते अछि एंड आम पाखरे वर्तमान केते अछि तो आमे केते नंबर रे रहउछु दैट यू नीड टू सी चेक ओके केते नंबर्स एग्जैक्टली okay so the Stockholm International Peace Research Institute reported that India expanded its nuclear arsenal in 2025 raising its estimated stockpile to around 190 warheads alongside continued modernization of delivery systems okay amara jo techniques achi ame seta ko भी modernize करूछु so what is SIPRI full form तो तुमको कहली already Stockholm International Peace Research Institute. It's an independent global think tank based in Sweden. It publishes the SIPRI yearbook annually. Every year they give this SIPRI yearbook.
ओके जो थरे कि तमरो ग्लोबल सिक्योरिटी आर्म्स कंट्रोल मिलिटरी एक्सपेंडिचर आ न्यूक्लियर फोर्सेस विषय रे सब डाटा गुडा को तमे सिपरी रे पाइबो किए केते खर्च कला तांको मिलिटरी पई हला किए केते वारहेड्स इंक्रीज कला कि डिक्रीज माने केते यूज कला काहा को देला कि काहाटू किछि आनिला कि केते से खर्च कला मिलिटरी ऊपर ए सब डाटा तमे पाई परिबो सुपीरियर बुक रो सब कंट्रीज रो okay so it is widely used by the United Nations governments and defense analysts for policy and research okay तो एटा जनरल लोक मान को पे कोन काम किछि काम ने तो बेसिकली एटा को काम रे आसे डिफेंस एनालिस्ट गवर्नमेंट को काम रे आसीबो पॉलिसी मेकिंग पय और रिसर्च पय का ओके सो ए वर्ष रो तमर जदी कहली गोटे जिंस ऑलरेडी म तुमको कहली कि हमरो 190 वारहेड्स हमें हे जाइछु वर्तमान इंक्रीज कर देइछु 180 थिला सेटा वर्तमान 190 हे जाइछि इंडिया कंटिन्यूस डेवलपिंग न्यू डिलीवरी सिस्टम जेमति कि हमें बहुत सारा मिसाइल विषय पढुछु हला लैंड बेस्ड मिसाइल एयर लॉन्च्ड वेपन्स एंड सी बेस्ड डिटरेंस हला माने सबमरीन्स आमे कोन तमे बहुत सारा आमे मिसाइल गुडा पढुछु देखुछु कि एटा एयर रु भी लॉन्च हे परिबो एटा लैंड रे भी लॉन्च हे परिबो एटा सी रु भी लॉन्च हे परिबो एमते बहुत सारा जिंस देखुछु तो ए सब रे भी आमे काम करूछु अंडर द ट्रायड कैपेबिलिटी ट्रायड माने ट्रायंगल तो तमे लैंड रे सी रे एयर रे तीनटा जगह रु तमे न्यूक्लियर वारहेड्स न्यूक्लियर वेपन्स यूज करिवार क्षमता रखुछो सेटा को कहंती न्यूक्लियर ट्रायड आको कहंती न्यूक्लियर ट्रायड माने कोठी भी तमे न्यूक्लियर ट्रायड देखिया को पाइलो ता माने हला से कंट्री पाखरे तीनटा जगह रु न्यूक्लियर वेपन यूज करिवार क्षमता अछि ओके जेमति कि हमें एटा कहलो हमें वर्तमान से ऊपर भी काम करूछु अग्नि मिसाइल्स गुडा को हे गला ब्रह्मोस मिसाइल हे गला जेति कि भी हमें आईएनएस विषय रे पढुछु हला सेथरे भी कोन न्यूक्लियर वारहेड हमें कैरी करके जाई पारुछु दैट मींस हमें सी रु भी चाहिए न्यूक्लियर वारहेड यूज करि परिबा तो ए सब जिंस तमे ए रिपोर्ट रे पाओ एंड ए वर्ष तमे पाइछ कि 180 टू 190 हेची एंड आमे हमरो डिलीवरी सिस्टम ऊपर भी काम करूछु माने हमें जो ट्रायड टाको इंप्रूव करिवारे काम करूछु तीनटा क्षेत्र रे हमें काम करूछु इंप्रूवमेंट रे ओके डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया's military expenditure reached 92.1 billion USD okay in 2025 an 8.9% increase from 2024 हमरो खर्च मिलिटरी बाबद रे हमरो खर्च भी बढ़ी छी 92.1 बिलियन डॉलर हेची which is 8.9% increase हमरो previous 2024 रे जदि हमें कंपेयर करिबा रैंकिंग 4th ग्लोबली आफ्टर यूएस चाइना रशिया माने सबटु अधिक खर्च मिलिटरी ऊपर के करछि यूनाइटेड स्टेट्स तापर चाइना तापर रशिया तापर हमें आछो सो वी आर द 4th इन एक्सपेंडिचर मिलिटरी एक्सपेंडिचर ओके तो कोन एटा सब रिपोर्ट डाटा गुडा को हम गोटे पाउछु 180 टू 190 हला हम केमते हमरो टेक्निक्स टा को इंप्रूव करूछु ओके सिस्टम्स इंप्रूव करछु तापर हम केते खर्च करिछु से खर्चटा भी बढ़िछि लास्ट ईयर रे जति हम देखिबा ग्लोबल न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स collectively held 9575 warheads ready for potential use वर्तमान एते की माने 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स माने ग्लोबल कथा एते पड़िछि हला खाली इंडिया कथा नुहो ग्लोबली जदि देखिबा एते की वारहेड्स तमे देखिया को पाइबो ग्लोबली सब कंट्रीज को ऐड करले सिप्री रेफरेंस्ड ऑपरेशन सिंदूर को रेफरेंस भी देछि व्हिच इज एन unusually severe military crisis between India and Pakistan underscoring South Asia's nuclear volatility ओके तो बहुत डैमेज भी हेछि दीटा कंट्रीज रो भी बहुत सारा डैमेज हेछि से जिंस टाको बेसी मेंशन करिछि ओके strategic deterrence India's modernization aligns with its credible minimum deterrence doctrine now this is one of our policy जो हमरो non proliferation treaty अछि any idea about it India एटा को साइन करिछि कि जे पर्यंत आम ऊपर की अटैक करिनी न्यूक्लियर अटैक आमे प्रथमे आम आडो अटैक करिवु नाही दैट इज आवर पॉलिसी ओके से पॉलिसी को हम अवॉइड करिछु एंड हमर जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज करूछु दैट अलाइंस विथ इट्स क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस माने आमे फर्स्ट तो कहा को क्षति पहुंचेबुनी कि
खास करके आमे को कौन कहलो जेमते एबे वार गुडा को चली बहुत जनकर लाइफ लॉस्ट लूज माने लॉस्ट हो जाउची सेटा भी माने से माने दायी नुहंती माने इनोसेंट लाइव्स आर लॉस्ट राइट बिकॉज ऑफ दिस वार तो से जिनसटा आमे करूनो आमर सेटा छै क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस आमे केबे भी क्षति पहुंचेबु नहीं से पॉलिसी को आमे माने अवॉइड करूछु अलाइन करूछु नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ओके आ विषय भी तुम जाके घरे देखि परिबो रीजनल सिक्योरिटी एक्सपांशन रिफ्लेक्ट्स इंडिया's response to evolving threats from China and Pakistan कौन पे हम एक्सपांड करूछु हमें मिलिटरी खर्चटा भी एक्सपांड करूछु हमें न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाउछु दैट मींस वी आर गेटिंग रेडी कि जदि भी किछि हम ऊपर अटैक हैला देन वी शुड बी रेडी राइट तो से इमान को चाइना पाकिस्तान थ्रेट को नेकी ही हम ए जिनसटा को वर्तमान एक्सपांड करूछु India's position as the fourth largest defense spender as I already said United States China Russia tapare India ashi so India's position as the fourth largest defense spender reinforces its role in global security architecture CIPRI warns warning dochi kono of weakening international arms control regimes and rising geopolitical tensions ame bi sera dekhiya ko pauchu ke geopolitical tension dhire dhire badhuchi so बस न्यूक्लियर वार कोठी भी ना हो वी ऑलवेज प्रे इट राइट ओके सो दिस इज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी जोटा मु कहउतली adopted in 1968 it prevents the spread of nuclear weapons promotes peaceful nuclear energy peaceful आमे एबे एति की काउंट हो जी एति की बढ़ेला बट ठीक अछि बढ़ाओ निजर डिफेंस पे त हमें बढ़ेला कथा नाही माने बढ़ेला कथा ना तो सेटा हमें करूछु हमें खेती करिया पे एटा करूनो राइट सो इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स promotes peaceful nuclear energy and commits state to eventual disarmament India is not a signatory okay India is not a signatory आ भितर गोटे स्टोरी अछि एनपीटी इंडिया साइन करी नाही कोन पे हम गोटे क्लास रे पढेबा गोटे स्टोरी अछि हैला माने जेतु टाइम कहली 1968 रे इंडिया रो पोजीशन भाबो आमे केते पछुआ थिलु से टाइम रे तो से टिल नाउ आमे एति त हमर अछि मिनिमम क्रेडिबल डेटा रे आमे केबे भी का को खेते पहुंचेबो नाही आम आडो फर्स्ट आमे अटैक करिवो नाही ए सब अछि बट इंडिया एनपीटी रे साइन करी नाही ओके सो सेटा भी गोटे फैक्टर ओटा के आमे आ गोटे केबे गोटे पढेबा comprehensive nuclear test ban treaty this was adopted in CTBT this was adopted in 1996 it bans all nuclear explosions हला तो ए treaty हिसाब रे सब nuclear माने तमरा explosions गुडा को बंद कराइतला ban कराइतला it has not entered into force because key states including India have not ratified it India एथरे भी राजी नहीं साइन करी नहीं India US China Pakistan ए माने केही भी साइन करना ओके ए ट्रीटी ऊपर ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एटा भी गोटे ट्रीटी अछि टीपीएनडब्ल्यू एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2021 लेटेस्ट जदि हमें कहि परिबा इट कंप्लीटली बैन्स डेवलपमेंट टेस्टिंग स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन हला तथा भी सब कंट्रीज करछन कि नहीं सब कंट्री माने टेस्टिंग करछन्ती से मानकर स्टॉक पाइलिंग करछन्ते एबे ही हमें देखिलु हमरो इंडिया रो 180 थिला हमें 190 कलु हमर तो बस 190 तमे जाई कि चाइना रे देखिबो केते अछि 600 800 एमती सब से मानकर अछि वारहेड्स ओके तो समस्त करछन्ते सो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया हैव नॉट जॉइन्ड दिस ट्रीटी एज वेल ओके तो तीनटा ट्रीटी हमें देखलु तीनटा ट्रीटी रे इंडिया जॉइन हे नाही ओके साइन करे नाही रिमेंबर इट Okay, so these are some basic things. Nuclear weapon kona weapons that derive destruction force from nuclear fission, okay, or fusion. Nuclear weapon states in the world recognized under NPT: United States, Russia, UK, France, China. NPT under माने NPT sign की करछंती United States, Russia, UK, France, China. Okay. Other nuclear armed states
जी की एनपीटी बाहर अछन आमे अछन जे इंडिया अछि पाकिस्तान अछि इजराइल अछि अनडिक्लेयर्ड रे एंड नॉर्थ कोरिया ओके माने आउटसाइड एनपीटी अछंती global stockpile around 9575 warheads in military stockpile with the US and Russia holding over 90%. Okay, so you imagine 9575 globally warhead अच्छी आम भितरे आम पाखरे केते अछि सेठु 190 आ बाकी तमे माने हिसाब करो आरो 90% of this warhead is with USA and Russia. Okay, so that's a thing that need to be noted. India's nuclear triad, as I said, land-based missile, air-based delivery, sea-based submarine. तीनटा जाक आमे डेवलप करूछु भी जेमते मैं तुमको कहली अग्नि सीरीज ओके विथ रेंजेस अप टू 5000 प्लस किलोमीटर सेति पे अग्नि 5 टा को आमे कहू कोन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल it can reach next माने आउट कॉन्टिनेंट को हमें तको पठे परिबा सो दिस आर लैंड बेस्ड मिसाइल लैंड रो ही लॉन्च हबो जाय कि से लैंड रे अटैक करिवो कैनिस्टराइज्ड मिसाइल माने जेमति तमे मिल्क को जेमति हमें रखुनु जो दूध वाला माने मिल्क को केमति कैन रे रखंती तो मिसाइल गुडा के भी हमें सेमिति स्टोर करके रखुछु दैट मींस मूवेबल गोटे जगह रो आ गोटे जगह को चाहिए हमें ताकू नहीं परिबा सेमति मिसाइल भी हम पाखरे अछि जाकू कहा जाय अग्नि प्राइम इज अ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल okay that means it can be transported from one place to another place easily. Air based delivery fighter aircraft such as Mirage 2000 Jaguar Sukhoi M30 Rafale ए सब भी अच्छी आम पाखे जोटा कि एयर बेस्ड एयरक्राफ्ट गुड़ाक एंड सी बेस्ड सबमेरीन आईएनएस अरिहंत आईएनएस अरिघाट एंड अब गोटे नुआ आसी ए सीरीज रे कोन थिला आईएनएस अरिहंत रो फैमिली रे थिला अरिधमान आईएनएस अरिधमान सेटा भी अच्छी जोथे कि तमे अगेन बैलिस्टिक मिसाइल गुड़ाक सी रु भी लॉन्च करि परिबो ओके न्यूक्लियर वारहेड्स भी सी रु भी तमे लॉन्च करि परिबो सो दिस इज इंडियास न्यूक्लियर ट्रायड जब भी किछ मेंस क्वेश्चन पचाला रिलेटेड टू न्यूक्लियर यूज माने वेपन एनपीटी विषय रे किंबा इंडिया रो न्यूक्लियर ट्रायड विषय रे किछ पचाला देन ए सब जिंस गुड़ाक हमको लिखिया को पड़िबो ओके सो ए रिपोर्ट हिसाब रे हम कोन देखिलु डिफेंस एक्सपेंडिचर हमरो बढ़ी 8.9% ग्रोथ हमें देखिया को पाइछु हमर मिलिटरी एक्सपेंडिचर एग्जैक्ट नंबर जदि हम कहबा $92.1 बिलियन ओके ग्लोबल रैंकिंग एक्चुअली इट फोर्थ हबो राइट फोर्थ लार्जेस्ट मिलिटरी स्पेंडर यूएसए रशिया चाइना देन इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट मिलिटरी स्पेंडर इंपोर्ट कथा जदि हमें देखिबा 8.2% हमें इंपोर्ट भी करूछु ओके आर्म्स गुडाको सो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट देखिलो में एस्टैब्लिश हेतिला 1966 रे सिप्रीटा हेडक्वार्टर तार अछि स्टॉकहोम स्वीडन रे फोकस एरिया अछि तमरो आर्म्स कंट्रोल मिलिटरी एक्सपेंडिचर न्यूक्लियर फोर्सेस सिक्योरिटी स्टडीज ओके एंड एटा केते वर्ष को थरे तार रिपोर्ट दिए एनुअली एवरी ईयर से बाहर करे कोन सिप्री ईयर बुक तो तमे जेबे भी इवन इंटरव्यू पाई जीवो जेबे भी तमरो इंटरव्यू थाओ ता पूर्वरु तमे ए जिंसटा देखि कि माने इंटरव्यू क्लासेस गुडा को मु जो नहीं है मु तांको कोइ कि तमे ए नंबर्स गुडा को मन रखि कि जीवो सिप्री रिपोर्ट विषय डायरेक्टली तुमको पचाय देबे डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट सिप्री रिपोर्ट इंडिया तकरे वर्तमान केतना वारहेड अछि इंडिया केते नंबर रे अछि इंडिया केते स्पेंड करछि मिलिटरी ऊपर ए सब निहत हमको जाने थिबा दरकार ओके चलो so now you have read it and time to answer this question try to answer चंद्र हेम्ब्रम वॉइस आछे तो
प्रथम स्टेटमेंट है इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स एंड यूएसए वाज द अच्छा सेटा जे तमे पढिछुलो दैट वाज स्पेंडिंग मिलिटरी स्पेंडिंग कथा हमें कहले सेथरे फोर्थ लार्जेस्ट ओके एटा तुमको से पचले इंपोर्ट रे इंडिया केते नंबर अछि एंड यूएसए वाज द टॉप सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया फॉलोड बाय रशिया माने यूएसए हमको सबुठ अधिक आर्म सप्लाई करछि तापर रशिया सप्लाई करछि एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर ओके के आंसर दो ना तुम कर दो फर्स्ट स्टेटमेंट को होची इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स ग्लोबली ड्यूरिंग एतिकी इट इज करेक्ट तो फोर्थ लार्जेस्ट मिलिटरी स्पेंडिंग करूछु सेकंड लार्जेस्ट हमें इंपोर्ट करूछु ग्लोबली हैला एंड सेकंड स्टेटमेंट इज यूएसए वाज द टॉप सप्लायर ऑफ आर्म्स देन रशिया ठो हमें आणुछु फर्स्ट हमें यूएस माने यूएसए ठो हमें अधिक आणुछु आ ता नेक्स्ट हमें रशिया ठो आणुछु दैट इज रॉन्ग ओके आमे सबठो अधिक रशिया रो इंपोर्ट करू तमे बहुत सारा आर्टिकल्स देखुथबो आमे रशिया रो एटा आणलो रशिया रो सेटा आणलो तो आमे इंपोर्ट सबठो अधिक खास करी कि माने एक्जेक्टली जदि आमे देखिबा 40% अराउंड आमे रशिया ठो आणुछु सेकंड आमे आणुछु फ्रांस रो अराउंड 29% आमे इंपोर्ट करूछु नॉट यूएसए ओके यूएसए पर भी आसो बट टॉप ए दीटा कंट्री रो हमें इंपोर्ट करूछु एंड सबुठु हाईएस्ट इंपोर्ट हम करछु रशिया रो ओके सो स्टेटमेंट 2 हमर भूल ही गेला ऑब्वियसली सो आंसर विल बी ए 1 ओनली ओके यस इंडिया's 100th रामसर साइट कोडा जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी so that is Jayaprakash Narayan bird sanctuary Surha Tal bitaku kuha jaye that is in Balia district of Uttar Pradesh so on the occasion of environment day which was in June 5 se dina amara eta announce kara gala prime minister lauded the designation of the Surhatal or Jayaprakash Narayan bird sanctuary in the Balia district of UP as India's 100th Ramsar site under the Ramsar Convention. So India now has the highest number of Ramsar sites in Asia. Entire Asia रे जदि हमें देखिबा हम पाखरे इंडिया रे सबुठु अधिक Ramsar site अछि and it ranks third globally. Okay, third globally, trailing only behind the UK and Mexico. Okay, Asia रे third. Sorry, Asia रे हमें largest. Globally world रे जदि देखिबा हमें third. तो यूके मेक्सिको करे हमें थर्ड यूके पाखरे अछि 176 साइट मेक्सिको रो 144 साइट्स आम पाखरे 100 साइट्स हे गला ओके एंड एशिया रे जदि हमें देखिबा वी आर द हाईएस्ट नंबर 1 रे हमें अछु सो दिस सेंचुरी इज द 13th रामसर साइट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश अर्लियर इन 2026 अदर यूपी वेटलैंड्स जेमते कि शिखा झील बर्ड सेंचुरी which was our 99th Ramsar site eta thila bodhe and Patna bird sanctuary were also added to the esteemed list okay so 13th Ramsar site kaharo Uttar Pradesh ro 13th Ramsar site jemti ki amara odisha re bartaman ketara 6 Ramsar Uttar Pradesh ro eta hala 13th Ramsar site Uttar Pradesh ro hi tamara Sikha bird sanctuary aw Patna bird sanctuary bi recently hi add kara jaythila okay wetlands kona these are areas of marsh fen peatland or water daldaliya jo jaga guda ko mati whether natural or artificial now ethor disaster to definition pachar thila dekcha question
डिजास्टर डेफिनेशन पचार तो तीन चार्टा स्टेटमेंट देथिला ए भितरु एग्जैक्ट डेफिनेशंस कोटा एंड दैट टू गोटे नथिला तीन चार्टा माने से चार्टा रो तीनटा तमरो डेफिनेशन कहयार छै सेमति वेटलैंड रो जदी पचार दबो डेफिनेशन so these are areas of marsh fen peatland or water whether natural or artificial permanent or temporary containing static or flowing fresh brackish or saline water including shallow marine areas up to kete 6 meter deep hela 6 meter deep at low tide it is defined as the wetland by the Ramsar convention तो Ramsar convention हिसाब रे this is the definition of our wetland कहा को कहिबा इन definition तो पूरा हमको मन रखेबार अछि okay in India however the wetland conservation and management rules exclude the river channels आम India हिसाब रे आम river channel paddy field drinking water tank and water body टाको आमे wetland रे रखना हो okay they are specially created for aquaculture salt production recreation or irrigation okay so this is some basic about this Surhatal or Jayaprakash Narayan bird sanctuary it lies in the middle stretch of the Ganga river basin it was originally declared a bird sanctuary in 1991 रे ako bird sanctuary announce करा जायथिला it is a large natural oxbow lake कौन oxbow lake माने कौन formed by the meandering course of the Ganga river oxbow lake रो गोटे particular shape अछि oxbow lake में कहा को कहबा जेटा भी आस्थिला भाबो ऑक्स रो केमती थाए सिंह थार षंढ रो हम्प केमती थाए एमती टिके ऊंचा थाए ना उठिकी थाए तो ऑक्सबो लेक माने सेमिति हैला ए टाइप रो थेबो माने एमिति फ्लो होथबो अंशुपा लेक जोटा तमे कहलो इट इज एन ऑक्सबो लेक तो ए शेप ऑक्स रो जो हम्प शेप रे थेबो सेतिमे ताको ऑक्सबो लेक कहा जाय सो दिस पर्टिकुलर Surhatal this is also an oxbow lake formed by the meandering course of Ganga river meandering माने आपको हमें कहबा meandering ना गोटे पाथ रे नैरो हेई जिबाटा ओके तो गंगा रिवर रो ही सेटा फॉर्मेशन हेची it receives fresh water inflow through 3 primary channel and experiences massive expansion over flood plains and marshes during the monsoon session okay so the sanctuary falls strictly under the Central Asian flyway critical stopover and wintering ground for thousands of migratory birds from Siberia and Central Asia notable species include vulnerable common pochard and thore biodiversity रो भी बहुत क्वेश्चन पचारि छी ओके पिग्मी हॉग विषय पचारि छी तमरो प्लैटिमस विषय पचारला ओविपरस एनिमल कोन ओके तो इंडिया टिके देखिया को पड़िबो इंडियन रिवर टर्न सारूस क्रेन्स एंड बार हेडेड गीस भी तमे एठी देखिया को पाओ द वेटलैंड सपोर्ट्स ओवर 221 plant species and 66 fish species including the vulnerable Walaguatu and Bagarius. This is fish species that you find in Surhatal. Okay. The abundance of fish attracts the vulnerable fishing cat, Prionalirus viverinus, okay, which uses the site as a prime feeding and breeding ground. Surhatal is associated with local historical, religious and traditional beliefs, making it an important socio-ecological landscape in eastern Uttar Pradesh. Okay. So देखो जितना जो दिन क्लास होचे से दिन नोट्स लिखि दबाटा बेटर जिनसटा से दिन ही सरी जबो तुमको टेंशन नथि अदरवाइज सेटा पेंडिंग ही चलिबो एबे तमे सुनुचो तमे देखुचो तुमको दा जिनस मन अछि लिखि दलो सेटा तम से जिनसटा तमर स्टोर ही के रहि गला नेक्स्ट वीक रे तमे जस्ट एमती रैंडम केतबेल भी फ्री हलो टिके रिवाइज कर दबो रहि गला सेटा ओके किछ असुविधा
सो रामसर कन्वेंशन केबे आमे साइन करथिलु आमे केबे इंडिया केबे रामसर कन्वेंशन साइन करथिला नो 1971 रे तो सेटा अडॉप्ट हेतिला हैला इंडिया केबे साइन करथिला इंडिया रा फर्स्ट रामसर साइट केबे हेतिला 1982 तो इंडिया भी सी टाइम रे साइन करथिबा ओके इंडिया रा प्रथम रामसर फर्स्ट रामसर तो सब ही साइन wetlands that are of national wetland definition हमें पढ़िलु हैला a place in which the land is covered by now this is basic definition but Ramsar convention हिसाब रे wetland definition हमें देखिलु सेरा भी नोट डाउन करबा and wetland that are of international importance सेदा को हमें Ramsar site बोली कहू world रो largest Ramsar site कोटा पांटानाल जोटा की साउथ अमेरिका रे छ इंडिया रो लार्जेस्ट रामसर साइट त हमरो सुंदरबन वेस्ट बंगाल रे अछि ओके मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड केबे अडॉप्ट हेतिला 1990 रे ता परे तमरो कोन हला इट आइडेंटिफाइज रामसर साइट दैट नीड प्रायोरिटी कंजर्वेशन हैला तो तमरो कोटा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रे दीटा अछि रामसर साइट कोन कोन इंडिया रो केवलादियो नेशनल पार्क आउ लोकटाक लेक मणिपुर ए दीटा लेक माने एटा नेशनल पार्क और एटा लेक एटा तमर अछि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड माने रामसर साइट जोडा को के प्रायोरिटी कंजर्वेशन दरकार इंटरनेशनल लेवल रे हो किबा नेशनल लेवल रे प्रायोरिटी दरकार ओके कंजर्वेशन एफर्ट्स टिके अधिका दरकार से जगह रे तो ए दीटा जगह तमर दीटा रामसर साइट तमर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रे अछि इंडिया रो 100 टा साइट्स बट से भितर ए दीटा साइट्स गुडा का अछि गुड इवनिंग रंजित okay so india केबे as I said 1982 रे जॉइन करथिला वर्ल्ड वेटलैंड डे हमें केबे करू सेलिब्रेट करू 2 फेब्रुअरी ओके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब्रुअरी so india re right now we have 100 ramsar site 100th ramsar site is J Prakash Narayan bird sanctuary UP रे चिलिका लेक हमर सबठु प्रथम इंडिया रो प्रथम रामसर साइट थिला तापरे लार्जेस्ट रामसर साइट तमर सुंदरबन वेस्ट बंगाल स्मॉलेस्ट रामसर साइट वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु दिस इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया स्टेट विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट तमिलनाडु ओके लिस्ट रे अगुआ अछि 14 एंड एबे हमें देखिलु उत्तर प्रदेश रे भी 13 टा हे गेलानी एटा को जदि हमें मिसेबा 100 तो उत्तर प्रदेश पाखरे भी 13 टा रामसर साइट ओके एंड ए दीटा तमरो अछि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड केबे अडॉप्ट करा जायतला 1990 रे कोठी स्विट्जरलैंड ओके मॉन्ट्रिक्स गोटे जगह स्विट्जरलैंड जेमति रामसर गोटे जगह ईरान okay so these are the statics जिंस गुडा का and एटा हमें देखिलो करंट अफेयर्स okay government plans to induct 2800 low floor e buses under the PM E-Drive scheme. Okay. So what is this PM E-Drive scheme? Central government tried to strengthen the transport that is mostly based on electric EV. Yes. So it is basically related to EV. EV ऊपर हमें वर्तमान कथा हो जो बहुत फोकस अच्छी है ला गवर्नमेंट रो भी फोकस अच्छी पेट्रोल रो दाम बढ़िलानी तो लोक माने चाहू चंती yes सब गवर्नमेंट नॉट ओनली ओडिशा एवरी स्टेट इज फोकसिंग के
केमिति से माने पेट्रोल व्हीकल्स गुडा को यूज कम करेंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड्स फ्लेक्स फ्यूएल व्हीकल्स. फ्लेक्स फ्यूएल व्हीकल भी आमे क्लास रे पढ़थिलु. फ्लेक्स फ्यूएल व्हीकल कोन एटा तमे चाहिले एथरे पेट्रोल पके परिबो, तमे चाहिले एथरे इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जिनस भी पके परिबो, से फ्यूएल भी पके परिबो, इथेनॉल प्लस पेट्रोल भी पके परिबो हैला. तो से आडो को आमे जाउचु एंड इटा ए जो पीएम ई ड्राइव इज बेसिकली रिलेटेड टू strengthen the public transport connectivity and promote sustainable mobility. Okay, so proposed fleet will comprise 1409 meter and as many as 12 meter e-buses to improve the accessibility and enhance connectivity in underserved and peripheral areas. So this was about Delhi government. Delhi government basically news ta thila, but amar janiyar achi PM e-drive scheme bisare. Okay, so the recently the Ministry of Heavy Industries, who ministry is involved in everything, that also is important. The Ministry of Heavy Industries has extended subsidies. अच्छा गोटे आउट क्वेश्चन मत मन पड़ला. ब्लू फ्लैग बीच समस्त जाउछु हमें पूरी ब्लू फ्लैग बीच एटा हला, ब्लू फ्लैग पाइला पूरी पाइला बेसरे भी हमें न्यूज रे देखिथिबु. तो एक्चुअली आर फिर सर्टिफिकेशन किए दउची दैट्स सेट ऑफ क्वेश्चन पचार थिला. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट समस्त ऑब्वियसली हां मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, बट जे पढ़ी जेबो से जानथिबो एटा इंटरनेशनली ताको सर्टिफाइड करा जाउची, नॉट नेशनली. तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस केमती एथरे सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एथरे केमती इन्वॉल्व हबो. तो एमिति से मिनिस्ट्री टा चेंज करेगी स्टेटमेंट टा भूल कर देला. तो सब मिनिस्ट्री गुडा को निहाती तमे देखुथिबो को मिनिस्ट्री कोथरे इन्वॉल्वड अछि. ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टा गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिले. एक्जेक्टली मते नाटा मन पड़ने, बट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मिले नहीं. ओके, so recently the Ministry of Heavy Industries has extended subsidies for electric two-wheelers till 31st July 2026 and for electric rickshaw and electric carts till 31st March 2028. Co-organization देखला. India's 12 blue flag with certified with the हाँ. Ministry of Environment. फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन हैला. सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन तमर किए दिए फाउंडेशन फॉर कौन एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो ये तमर दिए नॉट के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से एटा पचार देथिला क्वेश्चन, माने सेटा स्टेटमेंट गुटे देथिला तमर. तो भूल करिया पे से कौन चेंज करूची सेटा देखो. ओके आसीबा बैक टू क्लास. सो सब्सिडी रो ड्यूरेशन टा बढ़ाई देला मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री. तमर टू व्हीलर पे 31st जुलाई कर देला, इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक कार्स पे 31st मार्च 2028 कर देला अंडर द पीएम ई ड्राइव स्कीम. So e-drive माने बहुत जन भाभी देबे कि it is related to electronics. Yes, it is related to electronics, but हमें जो EV vehicles use करछो ता सहित related. Okay, electric drive revolution in innovative vehicle enhancement. This is the full form of PM e-drive scheme. Okay, so it is a flagship initiative which was launched in October 2024. It came into effect from October 1, 2024. Its primary aim is to accelerate the adoption of EVs, establish charging infrastructure, because तमें देखो तो charging ports बेसी में stations बेसी नहीं है बे. तमें एटा खाली बढ़े देले कौन हबो, सेल्स बढ़ेले कौन हबो, सेति की चार्जिंग पॉइंट्स भी हमको दरकार, नले आमे ही जनरल लोक माने ही हैरान हबो. And build a robust EV manufacturing system
in the country. तीनटा जिनस ऊपर फोकस प्रथमे केमती लोक माने अडॉप्ट करिवे ईवी रो यूज बढ़िबो सेकंड हला केमिति तमे चार्जिंग स्टेशंस गुडा को बहुत सारा एस्टैब्लिश करिवो थर्ड हला गोटे रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी बिल्ड करिवो ईवी पाएगा ओके द की ऑब्जेक्टिव इज टू स्पीड अप द ट्रांजिशन टू ईवीस बाय ऑफरिंग incentives जोटा कि सब्सिडीज भी गवर्नमेंट दोची इंसेंटिव फॉर्मेट रे for EV purchases and encouraging the development of charging infrastructure. Okay. So PM E-Drive scheme to be implemented through the following key component. Demand incentives to be provided for EV such as E2-wheelers, 3-wheeler, E-ambulance, E-truck and other emerging categories of EV. Grant for creation of capital assets. Funding to be provided for the acquisition of electric buses also and the establishment of comprehensive network of charging station and upgrading testing facility of the Ministry of Heavy Industries. Okay. Administration of the scheme including information, education and communication activities and fee for project management agency. Under this, states are encouraged to offer additional fiscal and non-fiscal incentives. So state माने central तो दोषी ता सहित center तमरो motivate कर states मानो कि states माने भी दियंतु subsidies okay जो माने भी use करछन भी जेमती एनको फॉर्मेट रे तमे रोड टैक्स वेव कर परिबो तमे टोल कमे परिबो माने जनरल पेट्रोल गाड़ी पे जति टोल कॉस्ट होची ईवी पे टोल आमे कमे परिबा पार्किंग फीस आमे किछि रखिबानी एमती किछि आमे सुविधा करेले लोक माने attract have EVs किनिबा पे okay and permit exemptions to further promote EV adoption. The scheme will be overseen by an inter-ministerial body, the project implementation and sanctioning committee. Okay, so entire ये जो EV drive scheme अच्छी आपको गोटे committee monitor करिबो. Okay, so committee रा ना कौन? Project implementation and sanctioning committee. Chaired by the Secretary of Heavy Industries. So this is under Ministry of Heavy Industries. तारो secretary ही आपको chairman माने आरो chairman रहिबो. And this PISC will be responsible for monitoring the progress केते कौन हैला कौन सब होची and ensuring the scheme's successful rollout. It will also have the authority to address any challenges including revising incentive, increasing the number of e-buses and approving the guidelines for testing agency. Okay, तो ये PISC पाखरे ये सब तमरो authority भी रहेला. To qualify for the PM E-Drive incentive, vehicle must be registered under the motor vehicle under the central motor vehicle rule and equipped with advanced battery technology. Okay. So PM E-Drive, it is a central pillar of India's EV policy. It was actually launched in October, not in September. It replaced the earlier FAME scheme. PM E-Drive पूर्वरु गोटे FAME भी थिला एटा बहुत जन जानि नथिबे. Faster adoption and manufacturing of electric vehicles. FAME scheme थिला ताको एटा replace करथिला actually. Okay. So it provides upfront demand incentives directly at the point of sale. Sale time re hi incentive मिलिबो via a digital Aadhaar linked e-voucher system, and it heavily prioritizes mass and public transport, targeting the deployment of roughly 25 lakh electric two-wheelers, 3.2 lakh electric three-wheelers and over 14,000 electric buses. Okay, and 2000 कोटी टंका तमरो allocate भी करा हिची public charging station setup करिया पे pan India highways and अलगा अलगा cities रे. Okay, so this is the PM E-Drive scheme. ता छोड़ा भी हमारे किसी scheme अच्छी की? Yes. Production linked incentive scheme, PLI for advanced chemistry cell, and 18,100 crore program is designed to incentivize company to set up mega factories within India to manufacture local long range EV, because EV रे हमें बहुत कम distance जाई परजु, तो केमिति हमें manufacture भी करि परिबा long larger duration के माने longer distance cover करि परिबा से टाइप रो भी manufacture करिवार आवश्यकता अछि. ओके,
तो सेटा को भी हमें फोकस करूछु PLI for auto and auto components incentives local manufacturing of high tech EV components like electric powertrains battery management system. It requires automakers to achieve a minimum of 50% domestic value addition to qualify for the payouts. So it basically companies मान को manufacturing sector रे से मान को provide करा जिबो production linked incentive scheme. PME drive तो basically किनिबारे भी अच्छी तीन टा फोकस में कहले ना खाली किनिबारे भी नहीं. PME drive तमरो कोन adoption of electric vehicles प्लस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो प्लस मैन्युफैक्चरिंग भी हम तो आम ये जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव टा कहलु एटा मैन्युफैक्चरिंग रे ही रिलेटेड केमी तमे नुआ टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्व करिकी तमे लॉन्गर डिस्टेंस कवर अप करथिबा ईवी बनेबो कि किछि कंपोनेंट्स भी बनेबो सेमते बैटरी वगैरह बनेबो तांको भी इंसेंटिव प्रोवाइड करा जिवो. एंड वन मोर यू हैव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार इन इंडिया SPMEPCI eta bhi gote achi. This policy aims to attract the global EV makers by lowering the customer import duties. Okay, ame globally jo EV makers achi takko ame target karichu eta for a limited number of completely built in units from for premium global EV manufacture provided they commit to invest a minimum of etiki koti semane invest karibe to set up local manufacturing plants in India within a fixed time frame. Okay, तो ये बेसिकली जो ग्लोबल EV जो मैंने भी बनाऊ चंदे मैन्युफैक्चर करछन तांको हमें हमर इंडिया रे तमे सेटअप करो इन्वेस्ट करो जेमते भी हमर जेति भी तमरा टाइज हो जे ना हमें MOU साइन करूछु कि अलग अलग कंट्री सहित हमर जो कोन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गुडा को होची सेतरा हमें से मान को कहूछु कि तमे भी एटी गुडी सेटअप करो तमे एटी करो तुमको भलो रिटर्न मिले ये मिले एमती कहीकि ये सब जिन आम करूँ कि तो ये जिनसा सेठी हम. ओके, तो एमती बहुत सारा तुम स्कीम अच्छी आउ कौन कौन तुम अच्छी बेसिकली द GST ऑन EV हैज बीन स्लैश्ड माने गवर्नमेंट आउ कौन करूची EV टाको प्रमोट करिया पे GST टाको कमे देची हैला 5% कर देची. सिमिलरली GST ऑन EV चार्जर and charging stations has also been lowered to 5%. Okay, and आमे green tax sorry green plates EV गाड़ी को तमे देखिबो नंबर प्लेट तांका ग्रीन कलर रे थाए. And road tax waiver, the Ministry of Road Transport and Highway mandates distinctive green license plate for EV, and this particular ministry has advised state governments to entirely waive road tax and registration fees for the EV vehicles. Government माने central government state government को advise करिची. Okay, a policy that most states have actively implemented. Okay, ठीक है. Complementing the central government, individual states जेमते तमरो महाराष्ट्र दिल्ली तमिलनाडु कर्नाटक उत्तर प्रदेश एमती स्टेट्स पूरा भी तंकर निजरो EV पॉलिसीज भी किछि बने चंती. Okay, the state incentives often include additional cashback, road tax exemptions, building mandates for charging units to sweeten the deal for local buyers. है ना, तो state हिसाब रे भी state रो भी दायित्व रही छी ये जिनसटा को आगु नबा पे, right? So this was all about your PM E drive. Okay, जिबा हमें next news को. Okay, so India UK launch observatory for critical minerals. Okay, critical mineral, rare earth mineral विषय हमने बहुत सारे क्लासेस till now पढ़ी सरलोनी. So India and UK launched the India UK Critical Minerals Global Supply Chain Observatory in New Delhi to अच्छा कोठी गला ये ऑब्जर्वेटरी कोठी सेटअप हेची न्यू दिल्ली रे मन रखिबो टू स्ट्रेंथन द resilient and diversified supply chain for critical minerals essential for clean energy technologies and advanced manufacturing. So a GSCO or full form ko taida Global Supply Chain Observatory. It is a tripartite joint initiative spearheaded by
टेक्स मीन माने टेक्नोलॉजी इनोवेशन in exploration and mining foundation, which is at IIT ISM Dhanbad, the IIT Dhanbad and the University of Cambridge. So tripartite agreement kuagala, tripartite joint initiative. तो तीनटा ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व अछन गोटे होची तमरो आईआईटी आईएसएम धनबाद और माने तार गोटे फाउंडेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग फाउंडेशन एंड ता सहित यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इज आल्सो इन्वॉल्व्ड. ओके टेक्स मीन आईआईटी धनबाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तीन जण मिसिकी गोटे ट्राइपार्टाइट जॉइंट इनिशिएटिव बनैछंती टू सेट अप इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी इन न्यू दिल्ली. ओके এটা হলো নিউজটা বেসিক্যালি. সো দ্য ইনিশিয়েটিভ স্টেমস ফ্রম দ্য ইন্ডিয়া ইউকে টেকনোলজি সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ. এই ইনিশিয়েটিভ আন্ডারে তোমার এটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে যাইছি. জিএসইও গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন অবজারভেটরি was announced during the India UK Prime Minister's bilateral engagement in October 2025 रे ए जिनसटा अनाउंस करा जायथिला. एबे एटा सेटअप हे जायछि. ओके कोठी न्यू दिल्ली रे. And COCO organizations is involved. TexMean is involved. TexMean is a sub branch हम कोई पर गोटे foundation company under IISM IIT Dhanbad. IIT Dhanbad is involved. University of Cambridge is involved. Okay. So and subsequently formalized through a research collaboration agreement जोटा कि March 2026 रे साइन हेतिला. तो फर्स्ट टाइम तमरो अनाउंस करा हेतिला अक्टोबर 2025 रे साइन करा हेतिला तमरो मार्च 2026 रे. GSCO functions as a data driven digital platform. एटा कोन बेसिकली दिस इज ए data driven digital platform dedicated to monitoring global critical mineral flows. हैला क्रिटिकल मिनरल्स कोठी केते अवेलेबल अछि, कोठु केमिति इंपोर्ट होछि, कोठी एक्सपोर्ट होछि, के केते रखिछि, ए सब जिंसर डाटा वर्तमान माने रखिबे. मैपिंग सप्लाई रिस्क. ओके आमे भी आणु छु ना क्रिटिकल मिनरल बहु जगह. एंटिसिपेटिंग मार्केट डिसरप्शंस एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस टू पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स एंड रिसर्चर्स. क्रिटिकल मिनरल मिशन जदि आमे कहि आमे लॉन्च करथिलु रिसेंटली. ता पे हमको फिर डाटा दरकार, ता रिगार्डिंग किछि पॉलिसी जानिया पे हमको डाटा दरकार. डाटा ग्लोबल डाटा दरकार. तो से ग्लोबल डाटा गुडा को हमें कोठ पाइबो. एमति किछि उटे ऑब्जर्वेटरी थिले हम पाखरे उटे डिजिटली डाटा गुडा को स्टोर हेगी रोइला. ओके supports the national critical mineral mission by providing data for mineral exploration, processing and recycling initiatives. Clear? So it will also reduce the supply chain vulnerabilities mane by helping India monitor and mitigate risk arising from the concentration of critical mineral processing in a few countries, particularly China कथा देखिबा. चाइना पाखरे चाइना होची रेयर अर्थ मिनरल रो सबठु अधिका ता पाखरे अछि हैला. ही इज द किंग. तो ता पाखरे जेहेतु अथॉरिटी अछि, ता पाखरे पावर अछि, हमको से न दबे दो. ओके से जिंसटा हमें मॉनिटर कर परबो, ता रिगार्डिंग हमें किछटा स्टेप्स नै परिबा. फैसिलिटेट्स द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन by ensuring secure access to key minerals such as lithium, cobalt, nickel and rare earth elements which are essential for EVs, battery storage and renewable energy technology. Rare earth भी पचार थिला UPSC रे थोड़ा क्वेश्चन. Rare earth कोठे कोठे यूज होची, तो ये सब जगह रे यूज होची. EVs रे यूज होची, battery storage, renewable energy ये सब जगह रे यूज होची. ओके GSCO supports the India-UK Vision 2035 roadmap by strengthening the cooperation in economic growth, technology and resource scarcity and security. It complements the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) with a focus on resilient and secure supply chain. Okay, तो दी जन करो combined effort रे एटा setup कराई. Okay. नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव.
In India, what is this? Navachar Mantra Initiative. Look. So recently, the Union Minister of Skill Development and Entrepreneurship, okay, launched the Navachar Mantra. It is a flagship national program aimed at identifying, mentoring, and scaling grassroots innovators. Okay, so this is basically related to upskilling. Okay, skill development operator related, and it is launched by which ministry? Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSDE ministry को launch करला दिल्ली रे. Navachar Mantra is a national initiative to identify, nurture and amplify India's most promising grassroots innovators and early stage entrepreneurs. Okay, जो माने नुआ नुआ start करछन्ते किछि innovate करछन्ते ideas अछि जा मन को पाखरे ता ऊपर एटा focus कराइछि. The program creates pathways for innovators from tier 2 and tier 3 towns. हला जो माने villages को belong करन्ते किबा छोटो मोटो towns को belong करछि सेमान को टारगेट करा हेछि. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हमर अछि ना किछटा गोटे लिस्ट अछि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 100 टा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमर अछि ता माने सेही डिस्ट्रिक्ट को हमको आउटिके डेवलप करिवार थाए. तो सेठु हमें बाछि के आनिबा इनोवेटर्स माननकु एंड अनडिजर्व्ड और अंडरसर्व्ड नो अंडरसर्व्ड ज्योग्राफी माने एते पॉपुलर नथिबो जो जगह सेठु हमें लोगों को बाछि के आनिबा एंड सेमान को हमें मेंटरशिप विजिबिलिटी and growth opportunity provide kariba. Okay, it is executed by the National Institute for Entrepreneurship and Small Business. It is executed, it was launched by this particular ministry. It is executed by NIESBUD, National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, in partnership with the Foundation for Innovation and Technology Transfer, IIT Delhi. So ये दीटा institutions are involved in this. एटा भी पचारुची ना जेमती नसम एसआर मिसाइल विषय पचार थिला टाटा एडवांस सिस्टम along with DRDO एटा बनेची सेटा ठीक ना भूल टाटा एडवांस सिस्टम नथिला. It was research center इमारत हैदराबाद along with DRDO laboratory से माने मिसे के बने थिले नसम एसआर मिसाइल बट सेरा को काटी देगी रिसर्च सेंटर इमारत को काटी देगी टाटा एडवांस सिस्टम पके दला. And even first कौन माने मूवी श्योर नहीं जे पर्यंत ओपीएससी आंसर की देली मूवी किछ कहि परनी से जेमते पचारि छी क्वेश्चन प्लस फर्स्ट स्टेटमेंट नसम एसआर मिसाइल थिला कि से सब्सिक्वेंटली दीटा मिसाइल लॉन्च कला सेरा भी हमें पढ़थिलु बट सेटा से चेंज कर देला फाइटर जेट यूज करा हेतिला बोली कि हमें तो हेलीकॉप्टर पढ़थिलु से फाइटर जेट यूज करा हेतिला तो से सेटा गोटे जिंस को से कंसीडर करबो कि न करबो ताको ही जाना. तो एमिति कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पड़थला कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स पड़थला हला. पीवीटीजीएस मु तमन को केते थर पढै छी पीवीटीजीएस मु कहि छी 75 पीवीटीजीएस अछंती 13 टा सी भितर ओडिसा रछन सेटा एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढि छी हला. जदि तमे पीवीटीजी क्वेश्चन देखियो इंडिया माने सॉरी ओडिसा नाम रो 13 टा अछंती सब ठीक अछि. थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट बळको आसला बळको माइग्रेशन सेतरे इंक्लूड करा हेची कि न करा हेची कि एटा करा हेची सेटा करा हेची माने एते इन डेप्थ तुम मन रखिबो पीवीटीजीएस इंडिया रे 75 टा अछंती से भितर ओडिसा रे 13 टा अछंती तार इन डेप्थ से पचारि छी माने तमे भाबो. ओके चलो. So this Navachar Mantra initiative will support innovations in sectors such as agri-tech, health tech, educational माने edtech and skilling, climate and sustainability, rural commerce and MSME enablement. तो बेसिकली एई सब सेक्टर को से फोकस करबो को जगार लोक मान को जो मान को तमे जनरली जो जगह तमे सुनी नथिबो जानि नथिबो अंडर सब थिबो माने अंडरग्राउंड एरियाज गुडा कथिबो अंडरग्राउंड माने से अंडरवर्ल्ड वन हो जो गुडा को तमरो एते पॉपुलर नथिबो टाउन्स गुडा को एते तांको पाखरे अपॉर्चुनिटीज बेसी नथिबो सेमिति जगार लोक मान को सिलेक्ट करे कि तांको केमिति आमे प्रोवाइड करि परिबा मेंटरशिप विजिबिलिटी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करिबा. एंड खास करी कि जदि से मान को पाखरे ए रिलेटेड किछि आइडियाज अछि देन निहाती वी विल बी बूस्टिंग दोस आइडियाज. ओके सो सिलेक्टेड इनोवेटर्स विल जॉइन ए ईयर लॉन्ग प्रोग्राम गोटे वर्षर प्रोग्राम
जो माने जहाँ को हमें सिलेक्ट करथिबो they will join 1 year long program with mentorship, webinar, showcases, investor interactions and guidance on business development, market access and scaling strategies. तो जो माने भी भाबो फॉर एग्जांपल गोटे गाँ रे गोटे पिलाटा एग्रीकल्चर रिलेटेड गोटे आइडिया अछि ता पाखरे बट ता पाखरे सेती रिसोर्स नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, तो से आइडिया जदी हम पाखकु से आने माने गवर्नमेंट पाखकु आने देन गवर्नमेंट ताको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करिवो 1 ईयर ताको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिवो तम माइंड गोटे आइडिया अछि से आइडिया को केमती हमें गोटे प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करि परिबा ताको हमें केमती कमर्शियलाइज करि परिबा ताको केमती हमें गोटे कोन पेटेंट फाइल करि परिबा पेटेंट कथा भी मु तुमको कहि छी आईपीआर हला पेटेंट हला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो पेटेंट फाइल करबा केमती केमती तमे गोटे प्रोडक्ट डेवलप करबो बेस्ड ऑन योर आइडिया केमती तमे लोकन को यू नो इन्फ्लुएंस करबो ए सब जिंस गुडा सेथरे रहबो ए सब जिंस तांको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा हेबो 1 ईयर लॉन्ग एंड व्हिच टू इंस्टीट्यूट्स आर इन्वॉल्वड आईआईटी दिल्ली एंड एनआईएस बीयूडी ओके The initiative aims to build a strong pipeline of grassroots innovators, support local problem solving, because सेमान को तकर आइडिया भी सेमते थिबो ना प्रॉब्लम को देखले तुमको आइडिया मिलेबो तमे गोटे इति खालो अछि तमे इति डेंगी जाय परनो तमर आइडिया आसे मु इति गोटे काठ पके देले मु इति पळे तो दैट इज एन आइडिया हैला गोटे प्रॉब्लम हेला रे तक पाखरे गोटे आइडिया आसेला तो सेही लोकल प्रॉब्लम्स गुडा को सेमाने जानथिबे तो सेमाने ही ताकू केमि सॉल्व करिवे सेटा को ही फोकस करा हेची support local problem solving, strengthen India's startup ecosystem and contribute to an innovation driven Vikshit Bharat. Okay. Okay. Panchayat Advancement Index. Okay. It has received a gold award this year. National awards for e-governance re tamaro Ministry of Panchayat Raj ro Panchayat Investment Index को मिली गोल्ड अवार्ड ओके एंड एटा बहुत थोड़ा पचारे माने पचारे माने अलग एग्जाम्स रे पचारे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ता को मिनिस्ट्री तमरो एटा दिए सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ओके द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स व्हिच इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव of the Ministry of Panchayat Raj has been selected for Gold Award at the National Award for E-Governance 2026 under the category of Digital Transformation through the use of data analytics in digital platforms. Okay, PAI, Panchayat Advancement Index, it has won the Gold Award. It was recognized under category 6 digital, माने एक category रे तंको Gold Award मिलना Digital Transformation through the use of data analytics in digital platforms by the Central Ministries, State and Union Territories. The award will be presented during the 29th National Conference which will be held in July in Jaipur, Rajasthan, and the conference is being organized by Department of Administrative Reforms and Public एते तो डिटेल कोन के आजकल पढ़िया को भी पढुची The Ministry of Electronics and IT is involved and Government of Rajasthan is involved in organizing this. And what was the theme? What will be the theme? Because it is going to be organized in July. A theme, माने a conference रो theme तमरो रहिबो Vikshit Bharat 2047 AI enabled, data driven and secure digital governance. Okay, this will be the theme of this particular conference. Okay, on e-governance. So Panchayat Advancement Index, it is India's first comprehensive data driven framework for evaluating the performance of Gram Panchayat. Okay, so Gram Panchayat माने केमिति परफॉर्म करछन से डाटा गुडा को डिजिटली स्टोर होची. Okay, it measures performance across 9 themes of the localization of sustainable development goals. SDG रो 9टा थीम को ये मेजर करूची परफॉर्मेंस एक्सेस करूची. Parameters evaluation is based on 150 indicators and 230 data points को नेगी से सब पैरामीटर देखेगी एवरी पंचायत रो केमिति तंगर परफॉर्मेंस रहउची पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल रहउची तमरो ए पर्टिकुलर इंडेक्स रे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स. सो दिस इज बाय व्हिच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज. एंड ताको गोल्ड अवार्ड मिलिबा कोठी ई गवर्नेंस 2026 रे जो कॉन्फ्रेंस हबार अछि कोठी राजस्थान रे सेठी तमरो एटा ताको प्रोवाइड करा जिवो.
and what is the theme? This is the theme for the conference. Okay, and taku ko category re milche gold award seta bhi dekhibo. Under the category of digital transformation through the use of data analytics and digital platform. Okay, chalo आज एतिकी थिला, आज टिके जल्दी मु सरी दोची बिकॉज़ एते ओवरलोड एबे एग्जाम सरी की पिला मन कर माने स्टेबल ही नथिबे, टिके स्टेबल हो देन विल स्टार्ट प्रीलिम्स होची जदी होची जो माने भी देछ न हले भी किछ ना कोन कर परिबो. यू हैव गिवन योर बेस्ट. तमे जान नथलो कि एमिति आसे क्वेश्चन पचारिबो एंड नेगेटिव मार्किंग बहुत हेतिबो ए टाइप रो क्वेश्चन तमर भी नो जदी तमर भी हेतिबो बहुत जन कर भी हेतिबो बहुत जन कर हेतिबो तो निहाती मु तो भाबुछु कट ऑफ बहुत कम जीवो माने कहि हबनी माने मु भी कहि परनी बट स्टिल एटलीस्ट 70 माने जदी भी जने 50 60 भी रखुची यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिकॉज सेरा किछि वेस्ट जीव नाही. नेक्स्ट ईयर मेंस रे तमरो काम रे आसीबो, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स रे काम रे आसीबो. ए सब जो हमें पाठ पढुछु कोन जो माने प्रीलिम्स क्लियर करछन से माने करछन कि नै जो माने मेंस भी लिखिबे से माने भी जिनसटा तांकर आंसर लिखि परिबे. ए वर्ष जो माने मेंस देबे आरो वर्ष देबे कि जो माने फिर प्रीलिम्स में पढुछन से मान को पय भी बेनिफिशियल कि तमे आउ भी किछि जदि एग्जाम को भी फोकस करूछो. करंट अफेयर्स तो सब थरे पढुछ तो सब थि इंपोर्टेंट तो खाली करंट अफेयर्स नो तमर भी गोटे स्ट्रेटजी रहबा कथा डिसेंबर पर्यंत केमिति तमे मेंस रेडी हेइ जिवो ऑप्शनल सारिबो तमर बहुत सारा जिंस अछि जदि न भी हला तमे तमर साइकिल टा कंटिन्यू रखिबो. यू शुड नॉट स्टॉप. ओके तो टिके किछि दिन रेस्ट नियो तापर विल स्टार्ट गोटे फुल जोश रे एंड मु ट्राई करबी आमे जिमते आज कम जिंस कथा हलो आमे बहुत टॉपिक्स आज डिस्कस करिनो किंतु डिटेल रे देखिलो हला तो सेमिति ही मु करबी टिके डिटेल रे जिबी एंड आई एक्सपेक्ट तमाने भी तमरो नोट्स बनेबो से हिसाब रे. Okay, so कार किसी डाउट अच्छी or else we'll wrap up the session. कौन किसी डाउट? so कौन पढ़ी ले जी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 100 रामसर साइट नवाचार मंत्र इनिशिएटिव कहारो एटा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. ओके मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एटा पढ़लो हमें जो जीएससीओ ताबरे सिपरी रिपोर्ट एते के तो पढ़लु बेसी जिंस हमें आज पढ़िनु बेसी जिंस पढ़नु एंड तमे कहो जदि तमे एमती चाहबो कि बेसी जिंस हमें पढ़िबानी कम जिंस पढ़िया बट डिटेल रे पढ़िबा बेसी जिंस देखो इंपोर्टेंट ए गुडा को भी इंपोर्टेंट एंड जो गुडा भी रहूची मु ताको नेक्स्ट वीक रे भी इंक्लूड करबी मन करो ए वीक रो पळेला हैला बहुत सारा जिंस न्यूज रहला बट आमे कवर अप करलु 5-6 टा आउ जो रिमेनिंग रहला सेटा पढ़िबा एनी हाउ जिंसटा तो पळेबनी ना कंटेंट पड़े पळेबनी तमे पाइबो ए वीक रे पढ़िया अछि बोली किछि माने नै ना आमे 1 जून टा 10 तारिख रे भी पढ़ि परिया बट पढ़िबा तो एग्जाम पूर्वरु तमरो सब न्यूज गुडा को केमति धीरे धीरे डिटेल रे कवर हेथिबो दैट शुड बी आवर एम. ओके सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई होप नेक्स्ट क्लास समस्ते पूरा खाता पेन धरि की एंड इवन आर भी जहां भी हमें पढिछु नोट्स तमे रेडी करके आसीबो एंड निजे भी किछरा रिसर्च करबो जेंति मु सिपरी रिपोर्ट कथा कहली तमे आउट के रिसर्च करि परिबो एनपीटी कथा कहली तमे आउट के ता विषय रिसर्च करि परिबो तम आडू भी किछ एफर्ट्स रहबा दरकार राइट. ओके थैंक यू.